फर्स्ट वाला आई थिंक लेट्स डिस्कस स्टॉक बाय एंड सेल. ओके, तो आई थिंक ये एक इजी प्रॉब्लम है बहुत. इसका सोल्यूशन इज वेरी इजी. इट्स द ऑप्टिमल सोल्यूशन ओनली. एंड let's see the question first. Okay, so you are given an array prices where prices of I is the price of a given stock on the ith day. तो क्या दिया है कि हर एक एलिमेंट जो है that is the stock price of that day. So first element is the stock price of first day, second element is the stock price of second day, and so on. What they are asking you is you need to buy a stock and sell the stock in such a way that you gain maximum profit. ठीक है. So as you can see my screen, I have written here profit ka formula. I'll just highlight it. So as you can see here, profit ka formula, you all must be knowing profit is simply selling price minus the cost price, correct? So is case mein selling price will be the price of the stock at which I will sell, and cost price will be the price of the stock at which I will buy it. तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस मेरा सबसे ज़्यादा होना चाहिए और मेरा कॉस्ट प्राइस सबसे कम होना चाहिए. एंड उसके लिए मैं क्या करूँगी, आई विल ट्रैवर्स थ्रू द एरे एंड आई विल सी कि कौन सा एलिमेंट्स की वैल्यू सबसे लीस्ट है. तो जब उसकी वैल्यू सबसे लीस्ट होगी तब आई विल यूज इट टू बाय द स्टॉक, राइट? आई विल बाय एट द मिनिमम प्राइस दैट द स्टॉक इज एट. So here in this case, I will show you another example. So this is my array. Okay, I will tell you the example. I'll show you the example that is given in the question itself, which is 7, 1, 5, 3, 6, and 4. Okay, so इस array में, which is called prices, उसमें first I will traverse through the array and check for the minimum element कि कौन सा minimum है. उसके बाद मैं वो मिनिमम एलिमेंट पे वो स्टॉक बाय करूंगी एंड उसके बाद मैं फिर से एरे में देखूंगी कि मैक्सिमम कौन सा है और वो मैक्सिमम प्राइस पे मैं सेल करूंगी और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट निकालूंगी. तो लेट्स सी द कोड नाउ. सो हियर दिस इज द कोड. int max profit vector and prices. तो मैं prices का एरे ले रही हूँ. उसमें if prices dot empty return 0. तो dot empty is a function in C++. The code is in C++ by the way. And you will return 0 if the prices is empty. यानी array में अगर कोई भी element नहीं है, you will return 0. Next, if there are elements in the array, what you will check, before checking you will actually initialize the minimum price. तो अभी तुम्हें हर एक array में हर एक element को check करना है और minimum price निकालनी है. So how will you do that? You will first take minimum price and initialize it a particular value. तो मैं कौन सा वैल्यू दूंगी? I simply हम क्या करते हैं, हम जब फर्स्ट एलिमेंट होता है कोई भी एरे का, हम वो इनिशियलाइज कर देते हैं एज द मिनिमम प्राइस. सो हियर द फर्स्ट element is basically prices of 0, correct? Because the indexing starts from 0. And then we have the maximum profit. इधर int आएगा by the way. int max profit. अब profit कैसे निकालेंगे? वो निकालने से पहले we'll initialize the max profit to 0, क्योंकि अभी के लिए तो कोई हमने कुछ buy नहीं किया, sell नहीं किया, तो obviously profit is 0. Now we will loop through the array and इधर हम एक ही बार loop करेंगे. क्योंकि हमें minimum निकालना है, minimum के बाद maximum profit निकालना है. So we don't need to traverse it more than once, correct? So I'll use a for loop, and for int I equal to 0, I is less than n, वो सब करने की जगह मैं क्या कर रही हूँ, I'm using int price in prices. तो अगर if I was coding it in Python, तो I would have written for int I in prices. तो I की जगह मैंने price लिख दिया है, ठीक है? तो हर एक element वो as price लेगा. तो price will be say first element, that is 7. Then price की value हो जाएगी the next element which is 1. Then third element which is 5 and so on. Okay, so in price, in prices, bracket minimum price. Now we will calculate the minimum price, which is the minimum of min price, comma price. Now I'm writing it in short, so I hope you understand it. And then I will calculate maximum profit, which I'm writing in the form as max pro. इधर मैंने profit लिखा है, I'll just write it as max pro. Okay. Yeah. So max pro will be the maximum of max profit
एंड कॉमा नीचे लिख रही हूँ प्राइस माइनस मिनिमम प्राइस. अभी why I have written this? Let's do a dry run of the program. Okay, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हाँ क्या हो रहा है बेसिकली ये कोड में. तो सबसे पहले हमारा प्राइस की वैल्यू क्या है? प्राइस की वैल्यू इज 7, फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, तो अभी वो लूप में जाएगा. लूप के जाने के बाद वो मिनिमम प्राइस विल बी मिनिमम प्राइस. आई एम नॉट राइटिंग इट पूरा. तो इट विल बी मिनिमम ऑफ 7, दैट इज मिनिमम प्राइस जो हमने प्राइसेस ऑफ 0 स्टोर किया था. प्राइसेस ऑफ 0 यानी फर्स्ट एलिमेंट व्हिच वाज 7, राइट. तो 7 कॉमा प्राइस. अभी प्राइस की वैल्यू भी फर्स्ट एलिमेंट की है व्हिच इज 7. तो minimum of 7, 7 will be 7, right? So that is 7. Now it will calculate the maximum profit. It will be max profit which was initialized to 0 first. So 0, comma price minus minimum price. So price is my current element which is 7, correct? So 7 minus minimum price मेरा मैंने initialize किया था the first element which was 7 again. So 7 minus 7 which is 0. तो maximum of 0, 0 is 0. तो मेरा maximum profit अभी भी 0 ही stored है. Now हो जाएगा again loop में. Price की value change हो जाएगी second element पे. Second element, can you see here? Second element is 1, right? So price की value अब हो गई 1. अभी min price, उसके बाद min price check कर रहा है. So min price is basically minimum of min price, comma min price हमारा था 7 पहले. 7, comma price that is 1, correct? तो minimum of 7, 1 is 1. तो अभी min price की value क्या हो गई? 1. इसके बाद हम max profit check करते हैं. Max profit is basically maximum of max profit which was 0. इधर हमें 0 आया था, करेक्ट. 0, price minus the minimum price. So what is the price for now? It is 1. Minimum price भी अभी जो हमने calculate किया वो भी 1 ही है, right? So 1 minus 1 that is again 0. तो maximum 0, 0 0 ही है. तो अभी हमारा profit 0 ही आ रहा है. Again वो next iteration पे जाएगा यानी next element पे जाएगा. तो price की value तभी क्या हो जाएगी? Price की value will be 5. करेक्ट. तो इसके बाद वो अगेन मिनिमम देखेगा. किस में से मिनिमम देखेगा? मिनिमम प्राइस जो हमने स्टोर किया था. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मिनिमम प्राइस में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं जो भी मिनिमम आ रहा है. और उसके बाद हम हर एक एलिमेंट देख रहे हैं उस एरे का और देख रहे हैं कि क्या वो इस मिनिमम नंबर से मिनिमम है. अगर वो मिनिमम है तो वो वैल्यू स्टोर कर दो मिनिमम में, करेक्ट. तो मिनिमम इसमें अभी वी गॉट मिनिमम प्राइस एज 1, कॉमा प्राइस जो है 5. तो मिनिमम ऑफ 1, 5 इज 1 ऑब्वियसली. उसके बाद मैक्स प्रॉफिट पे जाएंगे. आई एम जस्ट राइटिंग योर मैक्स एंड ये जो मैक्स फंक्शन है वो लगाएंगे. मैक्स प्रॉफिट हमारा लास्ट केस में 0 ही आया था. सो 0, कॉमा प्राइस माइनस द मिनिमम प्राइस. सो व्हाट इज प्राइस इन दिस केस? 5. मिनिमम प्राइस इज 1. सो व्हाट इज माय मैक्सिमम ऑफ 0, 4? This is maximum function. So maximum of 0, 4 is 4. So abhi mera max profit has the value 4. Okay. Now it will move to the next iteration. Price will become 3. See, if you can see this on the description page, 7, 1, 5, 3, 6, 4 वाला array I am taking as an example. ठीक है, उसमें price is 3. 3 के बाद again same procedure. Minimum का value हम देखेंगे. Minimum is min price which was 1. If you can see here 1 red से mark किया, comma 3 price से compare कर रहे हैं, हर एक element से compare कर रहे हैं. तो 1, 3 में minimum is 1. max profit क्या हो जाएगा? max profit will be max profit that is last case में आया था 4, comma price minus minimum price. What is price here? 3 minus 1 that is 2. So maximum of 4, 2 क्या आता है? It is 4, correct? So max profit अभी भी हमारा 4 ही है. Next, it will move to the next iteration, which is price is equal to 6. तो इस केस में minimum value है हमारी
minimum of, पहले हमारे इसमें min क्या आया था 1, price का value 6, तो minimum of 1,6 is 1, max of maximum profit basically is max profit which was 4 and prices minus minimum price which is 4,6 minus 1 is 5. So max of 4,5 is 5. So abhi mera max profit is changed to 5. It has the value as 5. अब मेरा और बचा है element which is 4. Last element है prices array में. तो price का value है 4. Minimum is minimum of min price which was in this case 1 था, right? Here 1, comma price की value है अभी क्या है 4. तो 1,4 में minimum is 1 again and then maximum profit क्या हो जाएगा? Max profit is max profit which was 5 in last case and prices minus 4 minus minimum. That is minimum क्या आया था इस case में? It was 1. So 4 minus 1 is 3. So max of 5,3 is 5. तो मेरा max profit क्या आ जाएगा 5. तो इस वे से हमने सारे एलिमेंट्स चेक किए उस एरे के कॉल्ड प्राइसेस. उसमें हमने हर एक एलिमेंट को मिनिमम के साथ कंपेयर किया. जो भी मिनिमम आ रहा था वो मिनिमम प्राइस में स्टोर हो रहा था. उसके बाद व्हाट वी डिड, वी कैलकुलेटेड द मैक्स प्रॉफिट. जो भी मैक्स प्रॉफिट आ रहा था यानी मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी वो हम मैक्स प्रॉफिट में स्टोर कर रहे थे एंड देन वी रिटर्न द मैक्स प्रॉफिट एज यू कैन सी इन द code that I have provided. Okay, so this was it for the buy and sell stock. If you guys have any doubts, you can ask. Any doubts? No, understood. Okay, so let's move on to the next problem then, which is sort colors. Abhi isme again problem statement is, just a second. Yeah. Okay. So the problem statement given here is we have been given an array called nums with n objects colored red, white and blue. तो हमें एक array given है, nums नाम है उसका, n elements है उसमें और हर एक element is either red, either white or either blue and we need to sort it in place. In place means you cannot create a new array in order to store the sorted elements. You have to sort them in place, that is you have to sort them in the same array. Okay, and you have to sort them in the order such a way that red comes first, then comes white and then comes blue. So if you see this question, इतना ही अगर question देखेंगे so you can't sort it in lexicographical order, right? You can't sort it using strings because red, white and blue में if you see blue is B, right? So A B C D E F G. अगर वैसे देखें तो ब्लू पहले आना चाहिए, फिर कम्स रेड एंड देन कम्स वाइट. बट इन्होंने बोला है कि पहले रेड आएगा, फिर वाइट आएगा, फिर ब्लू आएगा. एंड फॉर दैट दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड कि रेड इज associated with integer 0, white is associated with 1 and blue is associated with integer 2. Correct? So you have to basically sort an array of integers 0, 1 and 2. तो एक अनसॉर्टेड array होगा जिसमें 2, 1, 0 कैसे भी अरेंज्ड है एंड यू हैव टू सॉर्ट ऑल द जीरोस एकदम लेफ्ट साइड में, फिर मिडिल में 1 एंड देन राइट साइड में देयर विल बी 2. ओके, सो इसके सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं. फर्स्ट अप्रोच विल बी द ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो हम सोचेंगे कि सॉर्ट ही तो करना है, राइट? एक इंटीजर आ रही है तो हम मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट यूज कर सकते हैं. पर इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम है. as you can see here, I've already written the time complexity is of n log n and space complexity is of O of n. So therefore we can have a better approach, right? So I'll tell you what is better approach, but that's not it. Uska ek third approach bhi I'll tell you, which is actually an algorithm called as Dutch national flag algorithm. But before that, let's see what is the better approach, right? Because interviewer will not be satisfied with your answer if you tell them that it has the time complexity of O of n log n, right? So let's move to the better approach. Better approach mein kya hai? There are only 2 steps. You will have to traverse the array 2 times.
first step में you will traverse the array and you will count the number of zeros, ones and twos. ठीक है? उसके बाद what you will do is you will again traverse through the array and you will store first few indices with zero, जितने भी zero है, जितने count किए. तो let's say कि इधर मैंने लिखा है traverse the array and count zeros, ones and twos. Okay, and let's say कि I have stored कितने number of zeros A में, कितने number of one B में and कितने number of two C में. So A has the count of zeros, B has the count of ones and C has the count of twos, right? Now you will traverse the array again and you will override the first A indices with 0, first B or let's say next B indices with ones and the last remaining C indices with 2. तो उस वे से तुम्हारा सॉर्ट भी हो जाएगा, सारे 0 0 पहले आएंगे, फिर 1 आएंगे, फिर 2 आएंगे, एंड देन यू विल गेट द सॉर्टेड array. इसका मैं कोड इधर बता देती हूँ. I have written it. So as you can see, there's a for loop. Int I is equal to 0, I is less than a, I plus plus. तो I less than a पे जा रहा है. ठीक है? क्यों? क्योंकि हम पूरा array क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हमें सिर्फ first a indices पे 0 0 डालना है. So I'll show you an example here array का ही. It's here 1 2 0 2 1 and 0. ठीक है? तो पहले मैं zeros, number of zeros count करूंगी which is 2, number of ones count करूंगी which is again 2 and number of twos count करूंगी वो भी 2 ही है. ठीक है? तो मुझे क्या स्टोर करना है? मुझे पहले दो zeros हैं तो मुझे first 2 indexes पे 0 डालना है. So that's why I will go from 0 to less than a which is 2 in this case. So that मेरा index 0 और index 1 पे क्या डालूंगी मैं? 0 डालूंगी. तो उसके लिए I have written for int I equal to 0, I is less than a, I plus plus, array of I. In this case, I'm writing the name of the array ARR. It is nums given in the question. You can change it accordingly. Array of I is equal to 0. Next thing is I will again run a loop for the next few indices. ठीक है? तो अभी मुझे क्या स्टोर करना है? मुझे 0 स्टोर कर दिया, अब मुझे 1 स्टोर करना है. तो मैं for int I is equal to कहाँ से जाऊंगी? Will I go from 0 or will I go from where I have stopped? I will definitely go from where I have stopped, right? क्योंकि अब मैंने 0 डाल दिया, उसके बाद मैं डालूंगी 1. तो मैं कहाँ से करूंगी? I equal to A से, right? तो I equal to A यानी array of A. A अभी मेरा है 2. तो array of 2 यानी third element मेरा, correct? Because ये index है, indexing starts from 0. So third element will have the value of 1. Okay, तो ये ऐसा होगा. तो मेरा फर्स्ट 2 एलिमेंट्स मैंने 0 स्टोर कर दिया, फिर अब मेरा थर्ड एलिमेंट पे जाएगा 1 और ये कहाँ तक जाएगा? दिस will it go till the last element of the array? No, again not. Why? Because मुझे 1 स्टोर करना है, इसके बाद मुझे 2 भी स्टोर करना है. So I can't go to the last element, right? My stopping value would be a plus b. क्यों a plus b? क्योंकि a plus b as you'll do, you'll get 4. So पहले मैंने फर्स्ट 2 इंडेक्सेस पे स्टोर कर दिया 0 0. अब मुझे नेक्स्ट 2 पे करना है, तो नेक्स्ट 2 पे ही करना है, पूरा नहीं करना, राइट? सो नेक्स्ट 2 पे मुझे उसका इंडेक्स कैसे मिलेगा? A was the index where I stopped. तो मेरा 2 से लेके B is मुझे मतलब 2 स्टोर करना है. क्या स्टोर करना है? 1 के वैल्यूज. तो 2 1 के वैल्यूज स्टोर करने के लिए वो बेसिकली कहाँ तक जाएगा? 4 तक जाएगा. एंड 4 इज बेसिकली A plus B, 2 plus 2. That's why my stopping value is I is less than A plus B. So इधर भी अभी 1 स्टोर हो गया. क्यों? क्योंकि I पहले 2 था, which was the third element. Then I was 3, 3 is less than 4. And इधर फिर वो fourth element स्टोर हो गया. Then I iterates to 4, 4 is less than 4, no, false. तो रुक जाओ, फिर बाद में वापस हो जाएगा इस पे, किस पे? लूप पे जाएगा at the start. तो उसमें we'll run another loop for storing values of 2. तो अभी इसमें हमने देखा C का वैल्यू इधर 2 हमारे पास, we have 2 2s, correct? तो वो हमें स्टोर करने के लिए we will start with the index, this index. And what is this index? This index is nothing but A plus B, fourth index, correct? मतलब fifth element. Fourth index means fifth element. So that's why I have written, as you can see here, I've written for int I is equal to A plus B, I is less than N. You can also write A plus B plus C, but
basically all you need to do is you need to store 2s now, और अभी कुछ बचा नहीं है तो फिर you can go to the end of the array. So for I int I equal to a plus b, I is less than n, I plus plus, and array of I equals to 2. So that अभी ये 2 and 2 store कर देगा. Okay, so this was the second approach, and this second approach has the time complexity of O n plus O of n. Why 2 times O of n? Because हम array को 2 बार ट्रैवर्स कर रहे हैं. पहली बार तो हम काउंट कर रहे हैं जीरोज वंस एंड टूज, उसके बाद हम उसी सेम array में जाके 0 1 and 2 sorted order में place कर रहे हैं. That's why we are getting a time complexity of O of 2n. So that's why this cannot be the most optimal solution or optimal approach. An interviewer will definitely ask you that can you provide me with a better solution, right? So that's why whenever you get these sort of questions where there are 3 elements and you need to sort them in a specific order, and especially when you see if you see why this is known as Dutch national flag algorithm, because the flag of Netherlands consists of red, white and blue colors. That's why they have given the question that you need to sort red, white and blue. But even if you see 3 elements and you need to sort them, so you can use this algorithm anytime. Okay, so now we come to Dutch national flag algorithm. The main thing here is you need to remember that we will be using 3 pointers. Okay, in this case because we have red, white and blue colors, we will use the red pointer, blue pointer and white pointer. And now we will initialize the red pointer equal to 0, which will be and why I'll tell you later. First we'll initialize red pointer as 0, white pointer as 0 and blue pointer as n minus 1. Now why n minus 1? क्योंकि हमें कैसे स्टोर करना है, हमें पहले रेड स्टोर करना है, फिर व्हाइट स्टोर करना है और एंड में ब्लू स्टोर करना है, करेक्ट? तो उसका इसीलिए हम वो एकदम राइट साइड या एंड साइड पे होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर स्टोरिंग दैट ब्लू पॉइंटर as n minus 1, n being the size of the array. ठीक है, तो इस केस में you can see this is a array called nums और इसका n की वैल्यू है इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8. n की वैल्यू is 8, n minus 1 is 7. ओके, तो इधर ब्लू पॉइंटर में 7 स्टोर होगा, रेड और व्हाइट पॉइंटर पे 0 0 इनिशियलाइज किया है. तो व्हाट डू दीज पॉइंटर रिप्रेजेंट? हम ये पॉइंटर क्यों यूज कर रहे हैं? These pointers basically represent your position of that element, of red element, white element and blue element. The red pointer is the pointer that points at the position of the next red element. मतलब next red element मुझे कहाँ place करना है, ठीक है? मतलब मुझे 0 basically कहाँ place करना है, तो उसके लिए वो pointer है. White pointer represents the position of the current white element. ठीक है, तो हम व्हाइट पॉइंटर पे मेन फोकस करेंगे क्योंकि हम उसी से वैल्यूज को कंपेयर करने वाले हैं. नेक्स्ट इज द ब्लू पॉइंटर. ब्लू पॉइंटर जो है इट रिप्रेजेंट्स टू द पोजीशन वेयर द नेक्स्ट ब्लू पॉइंटर इज टू बी प्लेस्ड, व्हिच इज टू बी प्लेस्ड एट द एंड. ठीक है, सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय अ ड्राई रन. As you can see, I have already created this array with integers 0 1 and 2 placed in an unsorted manner. उसके बाद first I'll show you the code here. Okay, you can see I've initialized red pointer, white pointer and blue pointer as 0 0 and n minus 1. उसके बाद we will use only one loop, which is the while loop. ठीक है, while loop will check if the white pointer is less than or equal to the blue pointer. क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि हमें पूरा array को traverse करना है, यानी पूरे we have to go through the whole array and compare the elements and then sort them in place. तो पूरा array को traverse करने के लिए हम 0 से लेके blue pointer is already initialized as n minus 1, which is the last index, right? Or index of the last element. So we are basically traversing through the whole array if we are comparing these two pointers. That's why we are using that while statement. Okay. So I will just do a dry run here. First thing is while white pointer, which was initialized at 0 first,
0 is less than the blue pointer, less than or equal to the blue pointer. Blue pointer मेरा n-1 है, which is 7. So 0 is less than equal to 7, yes. Then check if nums of white pointer equal to 0. अगर मेरा nums of white pointer, तो nums of 0 is equal to 0 or not. तो इस केस में this is the nums of 0. Nums of 0 पे value है मेरी 0. It is equal to 0, yes. Now what did we see? We saw that 0 is associated with the color red, 1 is associated with the color white, and 2 is associated with the color blue. तो 0 जो है वो होना चाहिए सबसे लेफ्ट में, यानी रेड सबसे पहले, बीच में होना चाहिए व्हाइट का यानी 1, और एंड में होना चाहिए रेड का विच इज सॉरी ब्लू का विच इज 2. सो अभी अगर मेरा वैल्यू है 0, नम्स ऑफ 0 का वैल्यू, यानी मेरा व्हाइट पॉइंटर पे जो भी पॉइंट कर रहा है, मेरा व्हाइट पॉइंटर आई विल यूज दैट टू ट्रैवर्स ईच एंड एवरी एलिमेंट. सो इफ इट्स 0 देन स्वैप इट विद रेड, swap it with the red pointer. So I'll use swap function directly because I'm using it with C++. So nums of red, comma nums of white. I'm just writing it once here. ठीक है, R and W. तो अभी मेरा nums of red pointer मेरा किस पे initialized था? It was initialized to 0. And nums of white was also initialized to 0, as you can see here. Right? You can see here 0. तो दोनों की वैल्यूज भी 0 ही थी, तो स्वैप करने पे क्या ही रहेगा, 0 ही रहेगा. करेक्ट. सो वील ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन. लेकिन नेक्स्ट इटरेशन पर मूव करने से पहले मेरा वैल्यू व्हाइट पॉइंटर का तो 1 ही है, तो इसीलिए मैं अभी व्हाइट पॉइंटर को इंक्रीज कर दूंगी और रेड पॉइंटर को भी इंक्रीज कर दूंगी. सो माय रेड पॉइंटर नाउ बिकम्स रेड पॉइंटर प्लस प्लस, एज यू कैन सी हियर आई हैव रिटन रेड पॉइंटर प्लस प्लस and white pointer plus plus, right? So red becomes 1 and white pointer becomes 1. I'm writing it R and W for now. We'll move to the next iteration where W is 1, white pointer is 1. Is 1 less than equal to 7? Yes, it is. Move inside and check if nums of white pointer, जिसकी value 1 है, nums of 1 equal to 0. This is my array, right? Is nums of 1, 0 and 1, is it equal to 0? No, it's not. So it will move to the else if part. If you can see in this code that I've written, while के बाद आता है else if, right? This part. So just a second. Yeah. So else if part पे जाएगा and it will check if nums of 1 is equal to 1. Is it equal to 1? Yes. अभी हमने इधर check किया. This is equal to 1. So what we'll do, we won't swap anything. Why? Because हमें 1, अभी white pointer का value 1 है और white is associated with the number 1. So do we need to swap it with red or blue? No, we don't, because it is already in place. It is already sorted. So हम simply क्या करेंगे, हम white pointer की value increase कर देंगे so that we will move to the next element. So अभी white pointer plus plus हो जाएगा, तो white pointer will move to 2. Okay. So I'll just erase this. Okay. So अभी white pointer moves to 2. अभी वो वापस चेक करेगा, is 2 less than equal to 7? It is. Now nums of 2. Nums of 2 क्या है? Nums of 2 is 1, if you can see. Nums of 2 is 1 here. So nums of 2 is nums of 2 equal to 0? पहले वो चेक करेगा. It's not. So nums of 2 equal to 1. 1 है. So do we need to swap it with anything? We don't. So don't swap. So it will remain as it is. And बस white pointer का value increase हो जाएगा third पे. So W is 3. So it will check again. Start of the loop पे जाएगा. 3 is less than equal to 7. It is. Nums of 3 क्या है अब? यानी मेरा fourth element क्या है? Is it equal to? Wait, I'll just write the array here. 0, 1. Yeah.
So if my nums of 3 is equal to 0, now this is 0, 1, 2, 3. Okay, nums of 3 is equal to 0, it is. So what we have to do, we have to swap it with the red pointer. So swap nums of red pointer with nums of white pointer. अब if you remember, मेरा red pointer तो अभी भी I am marking it with blue, मेरा red pointer अभी भी 1 पे है, right? तो मैं किससे swap करूंगी? nums of 1 जिसकी वैल्यू क्या है? 0, 1. nums of 1 की वैल्यू 1 है. एंड nums of w मेरा है अभी 3. nums of w की वैल्यू क्या है? nums of w की वैल्यू is 0, right? So I will swap 1 and 0. तो अभी मेरा nums of 1 का वैल्यू हो जाएगा 0, nums of 3 का वैल्यू हो जाएगा 1. तो अभी मेरा array न्यू array is 0, nums of 1 is 0, फिर इधर 1, 1. Okay, and then comes 2, 1, 2 and 0. This is my array. Okay, so now after this you need to increase the pointer, red pointer भी white pointer भी. तो मेरा red pointer का value जो था वो 1 था, increase it to 2. white pointer का value 3 था, w plus plus will be 3 plus plus, that is 4. Okay, again check the white pointer. So is my white pointer 4 less than equal to 7? It is. It will move and it will check if nums of 4 is equal to 0. Is it equal to 0? This is 0, 1, 2, 3 and 4. It's not equal to 0. Is nums of 4 equal to 1? It's not. Is nums of 4 equal to 2 now? Yes, it is. You can see here nums of 4 is equal to, okay, nums of 4. Acha, wait, sorry. We are checking this. We are checking this array. I'm sorry. This is the array and nums of 4, 0, 1, 2, 3 and 4. This is the 2, right? So it's equal to 2, right? तो अभी क्या करो, you need to swap it with the blue pointer. Why blue pointer? Because मेरे को 2 को एकदम end में shift करना है, correct? तो I will swap it with swap nums of w with nums of blue. तो nums of w क्या है मेरा? nums of w is 4, which is 2, and nums of blue was initialized to 7, right? So nums of 7, which is actually 0 if you see, right? You need to swap them. So इधर 0 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, correct? So ये swap होने के बाद 0 and 2 होने के बाद you will get the array, new array as, I'll just write it down here. इधर आ जाएगा मेरा 2 and इधर आ जाएगा मेरा 0. No wait, उल्टा लिख दिया. इधर आ जाएगा 0 और इधर आ जाएगा मेरा 2. ठीक है, तो 2 सॉर्ट हो गया. अभी मेरा जब मैं ब्लू के साथ स्वैप करती हूँ तो शुड आई इंक्रीज माय पॉइंटर वाइट पॉइंटर और शुड आई डिक्रीज माय ब्लू पॉइंटर? बिकॉज मैं ब्लू पॉइंटर को तो इंक्रीज नहीं कर सकती, ब्लू पॉइंटर इज ऑलरेडी एट द एंड, सो आई हैव टू डिक्रीज माय ब्लू पॉइंटर एज ब्लू पॉइंटर माइनस माइनस. तो मेरा ब्लू पॉइंटर 7 पे था, यानी नम्स ऑफ 7 जो हमने देखा. तो अभी मैं लिखूंगी ब्लू माइनस माइनस विच विल बी, अब ब्लू की वैल्यू हो जाएगी 6. ठीक है, मैं व्हाइट पॉइंटर को इंक्रीज नहीं करूंगी. व्हाई? बिकॉज इफ यू सी हियर, इफ यू सी इन दिस एरे 0 की वैल्यू आ रही है और मुझे उस 0 को पहले तो शिफ्ट करना है पीछे, राइट? तो अब मैं उसी व्हाइट पॉइंटर पे रहूंगी जिसकी वैल्यू है 4 एंड आई एम राइटिंग इट हियर. आई विल स्वैप इट अगेन. मेरा 4 इज लेस देन इक्वल टू 7, so I will swap this with red pointer, correct? I will swap with red and उसके लिए आई विल राइट योर नम्स ऑफ. अभी मेरा रेड पॉइंटर का वैल्यू क्या था पहले? तो दैट वाज 2 हियर एज यू कैन सी. सो नम्स ऑफ 2 व्हिच इज 0, 1 and 2, राइट? 1. तो मेरा नम्स ऑफ 2 का वैल्यू था 1 एंड मेरा नम्स ऑफ वाइट पॉइंटर व्हिच इज 4, नम्स ऑफ 4 की वैल्यू थी 0. तो इसे स्वैप कर दो, तो 0 और 1 हो गया.
तो अभी मेरा इधर दिस 0 1 2 इधर मेरा आ जाएगा 0 and nums of 4 0 1 2 3 and 4 तो this इस place की जगह मेरा आ जाएगा 1 got it now as you can already see this array is sorted okay this array is already sorted but since we need to see all the test cases इसके बाद हमारा swap करने के बाद what we do we increase the red pointer to by 1 तो red pointer 3 हो जाएगा white pointer भी हो जाएगा 5 तो ऐसे करते करते अभी white pointer 5 हो गया 5 is less than equal to 7 correct तो it will check nums of 5 if it is equal to 0 now nums of 5 0 1 2 3 4 and 5 nums of 5 is it equal to 0 it's not it's equal to 1 so अगर it's equal to 1 तो वो उसी position पे रखो because 1 is correct it is in the middle it is in the right position फिर वो इंक्रीमेंट करेगा वाइट पॉइंटर को तो नम्स ऑफ 6 हो जाएगा इज 6 इक्वल टू 0 इट्स नॉट इज it equal to 1 it's not is it equal to 2 it is so what you will do you will swap it with the blue but blue के साथ swap करने के लिए बाद में last element भी मेरा 2 ही है तो वो in place sort हो जाएगा and then you will get this final sorted array okay I will show you the source code once again just a second I'll share my screen and show you the source code for the last time and then we'll be done right just give me a second yeah I think my screen is not getting shared is it Yeah, not getting shared. You can rejoin once. okay just a second I will I'll try yeah uh, I'm sharing the screen now just check if it is yeah. So this is basically the code for sort colors and I hope that you guys have understood it I basically did the dry run. We ran the loop once only using the while loop. We checked if the white pointer is less than equal to the blue pointer so that we can traverse to the full array. And then we checked for all three values. That is, if the white pointer was pointing to value 0. If it was pointing to value 0, then shift it to the left side so that because 0 is related to red. So that all the red, that is 0, comes to the left. That is, we did it using the swap function. Next, we check that if the element was 1, then shift it. Actually, don't shift it because it's already sorted. So keep it where it is. And then we checked if the value was 2, shift it to the right side because it is related to blue. So blue was supposed to be at the rightmost part, which has the value as 2. Right? So um, this is the code for it. And it is known as the Dutch national flag algorithm. If you guys have any doubts, you can ask or post it in the group. And that's it for today, I think. So I think we should end the meet now. Yes, understood. Okay. Yeah, let's end it then. Thank you very much. Bye bye. Bye.